initiative aimed at guiding law students, particularly at a crucial stage of their academic journey towards informed and confident career decision. Aligned with the vision of National Education Policy 2020 and guided by the Bar Council of India, such initiatives play an essential role in equipping students with the necessary exposure, clarity and professional insights required in today's evolving legal landscape. Before we proceed further, allow me to briefly introduce our institution. Aggarwal International Business School, established in the year 2004, is a self-financing ISO certified and NAC accredited institution affiliated with the Guru Gobind Singh Indraprastha University. It is approved by the All India Council for Technical Education for the technical programs and recognized by the Bar Council of India for law programs. The institute offers a wide spectrum of academic programs including MBA, MBA International Business, LLM, BBA Honours and integrated law courses such as BA LLB Honours and BBA LLB Honours, thereby fostering interdisciplinary learning. GIBS has consistently been recognized for academic excellence, rated A+ by the State Fee Regulatory Committee, awarded A grade by NAB, and maintaining top A ratings from the Joint Inspection Committee of Government of NCT of Delhi and Guru Gobind Singh Indraprastha University since 2013. It has also secured commendable positions in national ranking, including the Times B School Survey 2023. With strong affiliation, accreditations and consistent track record of excellence, GIBS has always focused blending academic knowledge with practical exposure, exactly what today's session aims to deliver. The purpose of today's session is to help students understand the importance of legal drafting in the legal profession. Drafting is an essential skill for every law student and legal practitioner as it forms the foundation of effective legal communication, whether in pleadings, contracts, opinions or application. Clarity and precision is drafting play a crucial role in professional success. Through this session, students will gain practical insights into the significance of drafting and its role in career advancement within the legal field. It is now my privilege to introduce our esteemed resource person for today's session, Dr. Renu Aggarwal ma'am. Ma'am is a distinguished advocate, mediator and mediator trainer with a vast experience in legal profession. She has been actively associated with litigation, legal drafting and mediation for several years and is widely respected for her contribution to the legal field. She has also served as the Senior Vice President of Delhi Bar Association, Hazari Court and has guided many young legal professionals through her expertise and experience. We are truly honored to have you, ma'am. I now request Dr. Nidhi Sharma ma'am to kindly come forward and felicitate our guest as token of respect and appreciation. Dr. Renu Aggarwal ma'am to address the gathering on the topic, legal drafting as a sign qua non for career advancement. Very good morning to all of you, both the madams, Dr. Sonia, all the dear students of law. First of all, I would like to thank Dr. Sonia and Director Ma'am and other dignitaries of the college for having me here and giving me the opportunity to be with you all. So before we start the program, I would just like to ask a question to all of you. You are students of law. So are you enjoying the subject? This is a question to all of you. Are you enjoying studying law? Yes. You enjoy the subject? Actually, it is a very good subject, I would say. Because till date, I am also enjoying the subject. And I hope and I believe that I would be enjoying for the rest of my life also.
It's a very interesting subject. I think you would all agree. You would agree with this? Liking the subject? It's a very vast field, very vast field. And by the time you grow, you will find that there are so many various opportunities in this line. So today's topic is legal drafting as a sine qua non for career advancement or career development. You can say career advancement. So let us first understand what is legal drafting. Do you know what is legal drafting? You know what is legal drafting? Legal drafting refers to precise construction of contracts, agreements, legal opinion, you can say legal opinion, and various other pleadings, plaints, written statements, replications in the court. You would be drafting legal notices. So many documents you will have to draft in your career. So this is legal drafting, and it is not merely a writing. It is not merely a writing. How does it differ? It has legal implication. It has legal binding. If there is a need to go to the court, it will have enforcement in the courts of law. Does it differ from general drafting? What is the difference between legal drafting and general drafting? Can anyone tell me? We will discuss to make it interesting, so that you know that law is very interesting subject. To make it more interesting, the session, we will keep discussing in between. Can anyone tell me the difference between legal drafting and general drafting? See, general drafting can be any writing, like it can be an essay, it can be a report, it can be a message on social media, it can be any drafting, that is general drafting. But an object, we will say that object of both the writings, legal and general, is the same. What is the object? To create a structured written document. Structured written document. Writing is written document, na? It has to be in writing, it cannot be oral, because we are talking about drafting. So it has to be a writing. So when, excuse me, please enjoy the session, you would love it. No cross talks in between, please pay attention, please. So the difference between general drafting and legal drafting, nobody could answer. So you have to understand what is the difference. You will listen, then only you will know the difference. If you don't listen, don't enjoy, we are all mature students. If you don't enjoy the subject, you will never come to learn. So enjoy the subject, enjoy the session, you will learn and you will get something from this session also. And when you are having lectures in the college, then also you have to pay attention. What is our aim? To grow in life. That is our aim, na? So we have to pay attention. So please. So we say legal drafting is different from general drafting. General drafting can be any writing, but object of both is to create a structured written document. And the difference lies in the intent and consequences of language used in the drafting. What is the difference? The difference lies in the intent of writing the document. Consequences of language used in the document. Language can make a lot of difference in writing. See, even a comma, just a comma can make a difference in the intent, in the meaning. I would give you an example. We say, let's eat, comma, grandma. What does it mean? Let's eat, comma, grandma. आओ grandma खाना खाते हैं. ये मतलब है ना? इसमें से comma हटा दीजिए आप.
सेम वर्ड्स हैं, सेम वर्ड्स हैं। कॉमा हटा दीजिए, क्या मीनिंग हो जाएगा? ग्रैंडमा को खाते हैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा। So language makes a lot of difference in any writing. और जो लैंग्वेज की इंटेंट है, जो लैंग्वेज के कॉन्सिक्वेंसेस है, that makes the difference between general writing and legal drafting, legal writing. So we have to take care of that, and in legal drafting we have to take care of many things. We will be discussing that. So legal drafting is a specialized drafting. It is not general. It is specialized drafting which defines legal rights and obligations. जहाँ पे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशंस को हम बात करते हैं, वो लीगल ड्राफ्टिंग हो जाती है। जनरल राइटिंग में वी आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू लॉ, बट हियर वी हैव टू सी द एप्लीकेबल लॉ, द रेलिवेंट लॉज। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। लॉ एंड फैक्ट, हम फैक्ट्स भी लिखेंगे। से इफ वी आर राइटिंग अ मैट्रिमोनियल एग्रीमेंट, if we are writing a matrimonial agreement, we will write briefly the facts also. We will write the facts. शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं, कब से अलग रह रहे हैं, these are the facts. But when we write the legal document, make it legal, हमने facts mention किए, we have to then see कि ये divorce लेंगे या साथ रहेंगे। बहुत केसेस आते हैं ना, साथ रहेंगे या डिवोर्स लेंगे। साथ रहेंगे तो हमने इसको लीगली कैसे मजबूत करना है, डिवोर्स लेंगे तो हमें इसको कैसे लीगली मजबूत करना है। डिवोर्स लेंगे तो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे, क्या करेंगे, कैसे लेंगे, कब लेंगे, कब कोर्ट में जाएंगे, कुछ एलिमनी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। अब बाइंडिंग साइंस, व्हाट वी डू, वी एनकोड राइट्स एंड लायबिलिटीज। व्हाट वी डू, we encode, we write rights and liabilities of the people who are concerned, and one is meant to be read. General drafting is meant to be read. You are sending the message, the other one is reading it and decoding. Maybe they are decoding, first encoding then decoding, but in legal drafting it is meant to be enforced, right? General drafting is to be read, but legal drafting is to be enforced. So this is the major difference. For any writing, general writing or legal writing, especially in legal drafting, take care of 4 C's. 4 C's. First C, it should be clear. First C is meant for that the document should be clear. Second, very good, concise, very good. Third, you can say consistent, you can say that, you can say concrete, you said concise, clear, concise, concrete, and fourth one, if anyone can tell, very nice, I'm impressed. Fourth one, complete. So remember, when you are drafting any document, remember 4 C's. You will do very well. Clear, concise, concrete, and complete in all senses. Don't leave any term with which the parties are wanting you to write. Don't leave anything. It should be complete in all senses. So this was 4 C's. Remember one more term, smart. When you are writing your document, it should be smart. Smart like you students are smart. You are all smart students now from GIPS. So all smart students will write a smart document, smart legal document. Okay? Smart means S stands for specific. Remember this. You just remember smart. And S stands for smart. Oh, sorry, specific. S stands for specific. M stands for maintainable.
What do you understand by maintainable? It should be maintainable in the eyes of law. Applicable. Applicable. Applicable means that it should be workable. The term we are writing in the document should be workable, should be applicable. If in the recovery matter, it comes to you and the person who has to pay the amount says that you write in the agreement that I will pay the amount due when my crop is ready and when it is cut and when I get the money from the market, I will pay the amount. Is it workable? Is it applicable? Is it workable? Then my crop is ready, it will get cut, I'll get the money, I'll pay the amount. You can't predict weather. If there is a storm and the whole this crop is spoiled, you are not selling it in the market, you are not getting any money, you will not pay to the person you have to pay. So it is not workable. For that, what we see for applicability, that there should be certain date. We should mention that on or before such and such this amount will be paid. Whether he borrows from someone or whether he sells his crop or whether he takes loan from the bank, whatever way. But he will be paying that amount on or before such date. So it should be applicable like this. So A we have done. R means relevant. R stands for relevant. When you are drafting a legal document, just mention relevant things. Irrelevant things will make your draft useless. It cannot be implemented in law because it will become ambiguous. Irrelevant things. So don't mention irrelevant terms. T stands for time bound. You have to write in your document that when, what, where the parties will do what, when and where. Okay? So remember SMART. S specific, M maintainable, A applicable, R relevant, T time bound. Okay? Whenever you are writing a document, remember that. So this is legal drafting, and the drafting should be so smart that if you are a lawyer and you are drafting a plaint or petition or a complaint and you are filing it in the court, the judge should like to read it. If it is very lengthy document, you are writing a petition of 50 pages, the judge would not read all 50 pages because he would say that this is not required. Just write relevant things. So it should be smart document writing which impresses the judge or the reader, whosoever is reading. It same goes with the judiciary also. The judges, if they are writing beautiful judgments, writing good judgments, the lawyers and the litigants love to read them. You will like to read again and again the judgments passed by that particular judge because you like those judgments. So writing is for them also. Okay? Now, next we will discuss career advancement. We discussed legal drafting. Now we will discuss career advancement. What is career advancement? What do you understand by career advancement? See, career advancement is a lifetime process. It is a lifetime process of learning, of working, and also transitions to move toward a desired future. Throughout your life, even if you have joined a particular line, you have chosen one particular line, you might like to change it at a particular age. So it's a lifelong process. To grow, you need to learn throughout your life. So career advancement is a lifelong process. And you have to identify your destination.
Now there are many students who are of 10th semester, 6th semester, 8th semester वाले लोग नहीं है यहाँ पे? हाँ, you were there, yeah, you just said that. And 10th semester के नहीं है. चलिए, तो 10th semester वालों को तो अपना करियर ढूंढना था भी बहुत जल्दी से. But you are also not very far. 8th वाले भी नेक्स्ट ईयर आ रहा है, आपका चांस है ना. तो आप अपना जब करियर ढूंढेंगे तो आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई योर डेस्टिनेशन. ओके, so you have to identify your destination, and once you identify your destination कि हमें क्या करना है, कहाँ पहुँचना है, then you can create a tangible road map. रोड मैप आप बनाएंगे, आपका डेस्टिनेशन आपको मिल गया, रोड मैप आप बनाएंगे, आपको उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है. एंड वंस यू डिसाइड योर रोड मैप, यू क्रिएट योर रोड मैप, you will definitely get to your destination. The choice is always yours. The choice is always yours. I said in the beginning that law is a very vast field. You have to choose your line. कैसे चूज करेंगे? Looking at your passion, looking at your values, looking at your skills. आपकी किस में एक्सपर्टीज है, क्या आपको कहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या आप करना चाहते हैं. तो जब एक बार आप डिसाइड कर लेंगे तो देन यू विल फाइंड योर डेस्टिनेशन डेफिनेटली. यू विल डिस्कस हाउ मेनी फील्ड्स यू विल हैव इन लॉ टू ऑप्ट. So once you choose your role, then and what is interesting you, and you choose your role, then you will feel energized. अगर तुम्हारे को शौक है, यहाँ पे अगर लॉ कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है उसमें, जी लेवल हमारा हाई होगा. अदरवाइज यू विल फील ड्रेन्ड. है ऐसा? होता है? अगर आपको शौक नहीं है, मन नहीं है बैठने का यहाँ पे, आपको जबरदस्ती बिठाएंगे तो क्या आप लेके जाएंगे कुछ यहाँ से? नहीं ना. तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है. आपके अपने जब आप लाइन भी कोई चूज करेंगे, यू आर ऑल डूइंग लॉ, यू मस्ट बी हैविंग फैमिली बैकग्राउंड, लीगल फैमिली बैकग्राउंड. काफी लोगों का होगा, काफियों का नहीं भी होगा. तो जिसका फैमिली बैकग्राउंड है, कई लॉयर्स होंगे, कई जजेस होंगे घरों में, तब भी आपने लॉ किया हो, या आपका कोई और एम हो जो आपने लॉ सब्जेक्ट चूज किया. अगर देखो घर में फैमिली बैकग्राउंड होता है तो आपको कुछ ना कुछ होता है दिमाग में कि हमें जज बनना है, हमें लॉयर बनना है, हमें लीगल एडवाइजर बनना है, हमें कंसल्टेंट बनना है. और लिटिगेशन में हमारे पास क्या क्या होता है? लिटिगेशन में क्या होता है हमारे पास? हम प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कॉर्पोरेट लॉ की तरफ जा सकते हैं. एंड कॉर्पोरेट लॉ वी चूज, हाउ आर वी जज्ड? हाउ आर वी जज्ड इन कॉर्पोरेट लॉ? अब कॉर्पोरेट लॉ फॉर्म में आप जाएंगे तो आपको कैसे जज किया जाता है कि आप कितने ब्राइट हैं, आपको लें या नहीं लें? आपकी ड्राफ्टिंग से. दे विल आस्क यू टू राइट अ पैराग्राफ, दे विल जज योर नॉलेज ऑफ लॉ. तो लीगल ड्राफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करियर एडवांसमेंट. और एक स्ट्रेटेजी अगर आप बनाती हैं, करियर एडवांसमेंट वी कैन से इज एन इंटेंशनल प्रोसेस. इट इज एन इंटेंशनल प्रोसेस. Those who treat it strategically rather than leaving it to chance, जो होगा होगा, छोड़ देते हैं ना हम लोग, जो होगा होगा. और नहीं तो हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे आगे अचीव माई गोल. इफ यू गो strategically, then you have chances to grow faster. अब if you leave it to chance, होगा तो होगा, मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जाने दो. Then you will not get that what you want. So you have to make a strategy also for achieving your goal. अब career advancement in law. अभी हमने देखा career advancement क्या है. In career advancement in law क्या होगा? Law में बहुत आपको varieties मिलेंगी. आप एकेडमिया में जा सकते हैं, आप पब्लिक सर्विस में जा सकते हैं, आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में जा सकते हैं, आप लिटिगेशन में जा सकते हैं. तो आप जो भी चूज करना चाहें ये आप में डिसाइड करना है.
आप लीगल सर्विसेज में जाना चाहेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहेंगे, ये आपका अपनी चॉइस है, आपका अपना करियर है। जब और ग्रो आप उसमें कर पाएंगे जो आपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज किया। आप में से कितने लोग हैं जो जज बनना चाहेंगे? दो जने। I tell you one thing, my daughter is also a judge. तो दो जनों ने कहा है कि जज बनना चाहेंगे। और कितने लोग लिटिगेशन में जाना चाहेंगे? वाह, वेरी गुड। So you can argue well perhaps. हाँ, you have interest in arguments. चलो, very good. So लॉयर एक जना बनना चाहेगा। लॉयर में एक ही हैंड रेज हुआ है। क्या बनना चाहेंगे बाकी आप लोग बताएं? देखिए, आप करियर एडवांसमेंट में है इस समय, अपने करियर चूज करना है, तो आपको अभी बनाना तो मेकअप, माइंड तो मेकअप करना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें माइंड मेकअप करना पड़ेगा ना, हमें क्या करना है? क्या करना चाहेंगे आप? कुछ नहीं माइंड मेकअप किया अभी, लॉ में एडमिशन लिया, माइंड मेकअप नहीं किया, हमें क्या करना है? देखो, चलो करना, कोई बात नहीं। पे अटेंशन टू दिस, दैट व्हाट आई वांट टू डू, दैट यू हैव टू डिसाइड, दैट देन ओनली यू विल अचीव योर गोल। यू हैव टू डिसाइड दैट। सी, एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल। आपका फोकस जब तक नहीं होगा, आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ माय डॉटर। शी आफ्टर द स्कूल शी वेंट टू यूके फॉर डूइंग हर लॉ। उसने LLB किया वहां से। आई हैव 2 चिल्ड्रन, 1 डॉटर 1 सन। तो जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, माय डॉटर व्हेन शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड, अब तो लॉ की डिग्री में आ गए हैं। शी वाज इन 10th स्टैंडर्ड बिकॉज शी वाज लुकिंग एट मी, सो शी हैड डिसाइडेड दैट शी विल गो फॉर लॉ ओनली, नो अदर डिग्री। एट दैट टाइम शी हैड डिसाइडेड इन 10th ओनली। जब उसने लॉ डिग्री सोचा तो I used to live in London for quite some time, so I had also decided that one of my child, either son or daughter, they should be doing barrister, bar at law, because I wanted to do bar at law myself. But because my LLB was from Delhi, so I could not get admission. Though I did 1 year ka course there to do bar at law, but I could not get admission. So at that time I had made up my mind that I would send my child to go to the UK and to do bar at law. So I sent my daughter just after the school. I am talking about focus. Just listen to it, how focused she was. So she did a LLB, LLM, bar at law, which is a rare degree in the UK, and she came back to India. Her mind was that she has to become a judge. That was clear in her mind. Nobody could change her. So she appeared in Delhi Judicial Services after doing bar at law, which is a rare degree, and after bar at law you can mint money in practice. Practice के लिए बता रही हूँ, after bar at law you can mint money in practice because that is a rare degree. But she was clear in her mind that I have to become a judge. So she appeared in Delhi Judicial Services after studying for 5 years there. She could have stayed there and practiced there, but came here, appeared in the exam, and first time she could not clear. She cleared all the papers because her law was also not from in Delhi, India. तो इंडिया से लॉ नहीं था, तो लॉ की बेसिक नॉलेज नहीं थी, हालांकि वी हैव कॉमन लॉज इन इंडिया एंड यूके, तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है, मगर फिर भी प्रोविजंस अलग अलग होती हैं। तो सारे पेपर्स क्लियर हुए, प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, बट बाय हाफ द मार्क she could not get through. आधा मार्क कम था। Again she appeared and she got 2nd rank in her batch. तो अगर हम एक बारी फोकस्ड होते हैं, एक बारी हमने माइंड मेकअप किया हुआ होता है कि हमने अचीव करना है ये, तो आप यू कैन अचीव। सो मेकअप योर माइंड व्हाट यू वांट टू डू। इट इज नॉट दैट कि यू हैव टू गो इन सर्विस ओनली। Even litigation is very interesting. I find it very interesting. Till date I am enjoying. So practice is also very good, and it is lifelong you have to study. अपना हम इसको कभी भी, हमें अपने आप को हमेशा
अपडेट रखना है। क्यों? क्योंकि रिसेंट जजमेंट्स हम नहीं पढ़ेंगे तो वी कैन नॉट बी finding ourselves updated with the current laws, which is very important for drafting. So career advancement, we talk about growth of our career, which we can switch over also, which is a lifelong process. I changed I give you my example also. I started teaching, I was in practice, I started my practice, then I taught in Campus Law Center. So I started teaching because I had interest in teaching also. So I started teaching, but then it was becoming very difficult. My children were small to cope up with teaching and with practice. So I had to choose from the two. क्या choose किया जाए, teaching या litigation? Litigation. Because you are interested in litigation. Very right. You are the boss of yourself, independent. That's a good answer. That's a good answer. So even I chose that then. I chose litigation only. I did not continue for teaching, but I'm not saying that's bad. That's a very good line, especially for girls. I have told my daughter also, if you can't become a judge, because it is not, you don't know whether you will clear the exam or not. I have told her that if you can't become a judge, then you make judges. You teach law. Your students will become judges. So she had thought that also, that if I don't become a judge, then I will teach law. So that is also a good line. But my intention was different for choosing litigation, because I had many cases with me. I was not able to do justice with those cases, because 10 o'clock I have to go to the college to teach, 10 o'clock the court sit. So I was not doing justice to my clients. So I thought I have to do justice to my clients, and this is service. So I opted litigation. Same one point was that I will be free, because I have other passions also in life. I like to have holidays also. Twice a year I go for holidays. So everything you have to see that what you want to do in life. Once you evaluate your passions, you have to evaluate your passions. This is one life. This is one life. You have to enjoy also your life. But you have to work also. There should be balance. Balance in work and enjoyment. And then family also. You have to see overall everything. Evaluate how you can manage. Management is very important for your career. If you manage well your family, your work, your own hobbies, you can do very well. So think of that, which line you want to choose. So strategy क्या होगी जो हम adopt कर सकते हैं for choosing or for growing well? That is work on diverse matters. Litigation वाले सुने? Work on diverse matters first. In the initial stages, you work on diverse matters means you do civil law, you do criminal law, you do IPR, you do tax matters. All the whatever you can get, you do. But later on you can specialize. You can choose that I want to practice in, I don't like this field, I don't like this field, I should be sticking to either civil law or criminal law first. And then build discipline in documentation and case preparation. जब केस प्रिपेयर करते हैं, डिसिप्लिन जरूर रहना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है. जो टाइम दिया है मीटिंग के लिए, कोर्ट में जाने का जो टाइम है, डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करें. ऑब्जर्व कोर्ट रूम, ये इंपॉर्टेंट है. अगर लिटिगेशन में आप जाना चाह रहे हैं तो कोर्ट रूम ऑब्जर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन इंटर्न्स कम टू अस, I make it a point, I tell them that go and sit in this particular court. And different courts. If you observe courtrooms,
different courts, go to family courts, go to civil courts, go to MM's court. You sit in different courts, go to labor court, then you can see how we have to work. So observe courtroom atmosphere. And then as you progress, जब आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा, जब आप प्रोग्रेस करते हैं, then you can handle the matters independently. फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं. इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने में you can become a senior advocate also, designated senior advocate. Designated senior advocates की वैल्यू आप लोगों को शायद नहीं पता, तो जब आप आएंगे प्रैक्टिस में तो पता लगे कि क्या वैल्यू है. तो आप प्रैक्टिस में भी you can grow a lot. अब लॉ फर्म में आप जा रहे हैं, तो लॉ फर्म में आप क्या कर सकते हैं, आपको आपके सीनियर्स क्या करेंगे, छोटी छोटी डील्स डील करने के लिए छोटे छोटे क्लाइंट्स आपको दे देंगे. शुरू में नहीं देंगे, शुरू में दे विल आस्क यू टू ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स, बट लेटर एज यू ग्रो दे कैन आस्क यू टू डील विद योर क्लाइंट्स. छोटे छोटे क्लाइंट्स आपको देंगे, फिर आप ग्रो करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी हैंडल करेंगे. सो यू हैव टू ग्रो in whether in corporate or in private litigation. In service, so your promotions are done yourself, but that also you have to excel. You have to do your judgments thoroughly if you go in judiciary. Then the promotions are certain. So these strategies you adopt. And one more thing, whatever field you choose, you have to take care of ethics and integrity. आप जिस भी करियर को चूज करेंगे, आप जब स्कूल में थे तो आपने मॉरल साइंस पढ़ा होगा, पढ़ा था मॉरल साइंस? नहीं पढ़ा? मॉरल साइंस का सब्जेक्ट होता है ज्यादातर, नहीं था, कोई बात नहीं. मॉरल साइंस इज आल्सो एथिक, पार्ट ऑफ एथिक्स. स्कूल में मॉरल साइंस बोलते हैं, बाद में जब हम प्रोफेशन में आ जाते हैं तो वी से दैट प्रोफेशनल एथिक्स वी हैव टू फॉलो. आप सर्विस में हैं तो भी, आप प्रैक्टिस में हैं तो भी, आप कहीं और काम पर भी हैं तो भी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टेन एथिक्स. अब एडवोकेट्स के लिए एथिक्स कहाँ प्रोवाइड किए गए हैं? इंडियन एडवोकेट्स एक्ट में, एडवोकेट्स एक्ट 1961 प्रोवाइड्स फॉर एथिक्स. और एडवोकेट्स एक्ट में देन बीसीआई इज एम्पावर्ड टू फ्रेम रूल्स. बीसीआई पता क्या होता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. वेरी गुड. और बीसीडी? वेरी गुड. देखो लॉ स्टूडेंट से इतना तो पता है ना? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया. सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास पावर है रूल्स बनाने की, टू फ्रेम एथिक्स के लिए, कि क्या एथिक्स हमें फॉलो करनी है. तो हमारे क्या एथिक्स होते हैं? हमारी देयर इज अ ड्यूटी टू कोर्ट. कोर्ट को कोई ड्यूटी होती है कोर्ट की तरह? क्या ड्यूटी होती होगी? मेंटेन डेकोरम. वेरी गुड. मेंटेन डेकोरम ऑफ द कोर्ट, रिस्पेक्ट द जज, रिस्पेक्ट द चेयर, है ना? तो ये हमारी कोर्ट की तरफ हमें ध्यान रखना है कि हमें डेकोरम हमेशा मेंटेन करना है. एंड देन ड्यूटी टू क्लाइंट. क्लाइंट की तरफ हमारी क्या ड्यूटी होती है? कीप रिप्रेजेंटिंग देम. वेरी गुड. रिप्रेजेंटिंग देम. एंड उनके रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उनके इंटरेस्ट को वॉच करके, उनको देखना है हमने, दूसरी पार्टी से मिल नहीं जाना, अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वॉच करके वी हैव टू रिप्रेजेंट. वेरी गुड. और क्लाइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने उनकी जो इंफॉर्मेशन वो हमें देते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, उसको डिस्कस नहीं करना इधर उधर, नहीं तो क्लाइंट आपसे भाग जाएगा. ये हमारा एक एथिकल प्रिंसिपल है प्रैक्टिस का. वी हैव टू कीप क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी क्लाइंट के लिए. ड्यूटी टू कलीग्स. कलीग्स को लिए क्या होगी? उनके साथ बिहेव प्रॉपर्ली करना. कलीग्स कौन होते हैं? ऑपोजिट काउंसिल. वो हमारा कलीग है ना, इस केस में ऑपोजिट काउंसिल है, बट ऑलवेज आउटसाइड तो इज आवर कलीग, ही और शी इज आवर कलीग. सो हमें उनके साथ हमेशा कर्टसी मेंटेन करनी है, अच्छा बिहेवियर रखना है,
और उनके क्लाइंट को छीनना नहीं है। ड्यूटी टू ऑपोजिट पार्टी, क्या ऑपोजिट पार्टी के लिए भी कोई ड्यूटी हो सकती है हमारी? अपने क्लाइंट के लिए तो है। क्या जो दूसरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, जिसका हम केस हमारी पार्टी के अगेंस्ट जो है, जिसके खिलाफ या तो हमने केस डाला है या जिसके खिलाफ हम अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उसके लिए भी कोई ड्यूटी है हमारी? हो सकती है कोई? ऑपोजिट पार्टी को, चलो वो तो हमारे अपनी पार्टी का ही हो गया कि हमें उनके लिए टाइम का ध्यान रखना है। अगर हम अपने टाइम पर नोटिस देंगे, आप समझ लो 138 NI एक्ट पढ़ा है आपने, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा है आपने, तो उसमें चेक बाउंसिंग के जो केसेस होते हैं वो 138 में जाते हैं, सेक्शन 138 में। तो उसमें पर्टिकुलरली वी हैव टू टेक केयर ऑफ टाइम, कि इस टाइम पर चेक बाउंस हुआ, उस चेक बाउंसिंग के बाद हमें इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें नोटिस देना है, फिर इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें केस फाइल करना है। अगर एक भी दिन लेट हो गया तो वी कैन नॉट फाइल केस अंडर सेक्शन 138, देन वी विल हैव टू फाइल केस फॉर रिकवरी। सो टाइम की जो आप बात कर रही हैं कि हमें टाइम पर नोटिस देना है, वो हमारे अपने क्लाइंट के लिए भी है, ठीक है। बट जो इम्प्रॉपर टैक्टिक्स होती हैं वो हमें दूसरे क्लाइंट के लिए नहीं फॉलो करनी। इन टैक्टिक्स तो हमें करनी है, टैक्टिक्स तो हमें अपने क्लाइंट को जितवाने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ तो हम करते हैं ना कि इसको किसी तरह से रिलीफ दिलाएं हम, बट दो शुड बी लीगल, इलीगैलिटी में नहीं जाना कहीं भी, ठीक है। तो प्रैक्टिस में भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी, और सर्विस में जाएंगे तो सर्विस में अपना हमें हमेशा मॉरल ड्यूटी, अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी से काम करना है। सो करियर एडवांसमेंट इन लॉ रिक्वायर्स continuous what? Continuous learning, ठीक है। Throughout the life continuously we have to learn. अपडेट हमें हमेशा रखना है। अगर हमारी लर्निंग हमने जहाँ स्टॉप कर दी तो हमारी ग्रोथ रुक गई, वहीं पे हमारी ग्रोथ रुक गई। हम एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं। इफ वी हैव टू ग्रो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। तो ये था करियर एडवांसमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं इन लॉ हमारी नेटवर्क क्या है, हमारा जो नेटवर्क है दैट इज आवर नेटवर्क। इन लॉ आवर नेटवर्क इज आवर नेटवर्क। तो हमारा नेटवर्क जो मैंने बताया अभी कि हमें किस तरीके से काम करना है, दैट शुड बी प्रॉपर, दैट इज आवर वर्क। ओके, अब हम लास्ट उस पे चलते हैं सेगमेंट पे अपने सेशन के। लीगल ड्राफ्टिंग एज अ sine qua non for career advancement. This is our topic. हमने डिस्कस किया व्हाट इज लीगल ड्राफ्टिंग, व्हाट इज करियर एडवांसमेंट। अब वी विल सी लीगल ड्राफ्टिंग एज अ sine qua non for career advancement. What do we understand by sine qua non? What does this term imply? Sine qua non. Most important. Very good. Yes. अभी देखा तो नहीं, सर्च तो नहीं किया? चैट जीपीटी आजकल बहुत हेल्प कर रहा है ना? गुड गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। देखिए आजकल हमने लीगल ड्राफ्टिंग की इतनी बात करी है, तो लीगल ड्राफ्टिंग आज की डेट में इज वेरी इजी। आप तो सब स्मार्ट स्टूडेंट्स हो। हमारे टाइम में हम लोगों को बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती थी ड्राफ्टिंग के लिए। बहुत आप तो आजकल बोलो चैट जीपीटी, सब कुछ रेडी है ना? सब कुछ रेडी, आप कुछ भी रेडी करो उस पर फटाफट, मगर उस पर रिलाई नहीं करना। बहुत ध्यान रखना है, ये नहीं कि वहां से ड्राफ्टिंग निकाली और फाइल कर दिया। नो, यू हैव टू थॉरोली चेक इट। अगर उसको इफेक्टिव बनाना है, उसको ठीक बनाना है, उसको रिलीफ दिलवाना है अपनी पार्टी को, या कहीं भी हम नोटिस भेज रहे हैं, इट हैज टू बी इफेक्टिव ड्राफ्टिंग, एंड दैट कैन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन वी गिव आवर टाइम टू इट। वी हैव टू अप्लाई आवर ऑल द जो टेक्निक्स की बात करिए वो भी हमें ध्यान रखना है कि फ्यूचर में ये कितना काम करेगी, आने वाले टाइम में ये कितना हमें हेल्प करेगी।
हमारी पार्टीज को, क्योंकि अगर आपने एक पार्टी को रिलीफ दिला दिया, एक पार्टी के लिए अच्छा ड्राफ्टिंग किया, तो वो पार्टी अपने आप आपके पास और क्लाइंट्स लेके आएगी कि उसने फटाफट मुझे रिलीफ दिलवाया था। आजकल आपने एडीआर पढ़ा है? एडीआर पढ़ा है आपने? 6th सेमेस्टर वाला में तो नहीं पढ़ा होगा शायद, 6th में पढ़ लिया? अरे वाह, 5th में पढ़ा है। तो क्या होता है एडीआर? वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में क्या क्या आता है? कुछ और भी आता है? जुडिशियल सेटलमेंट भी आता है? आता है? 5 चीजें हैं ना उसमें। हाँ, तो इसमें एडीआर में जो आपने मीडिएशन, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन की बात करी है, तो आप देखेंगे अगर आप इफ यू चूज टू गो फॉर कॉर्पोरेट लॉ फर्म, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में आप जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम, आप यू कैन चूज दिस लाइन आल्सो, यू कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। आजकल बहुत ग्रो कर रहा है ये भी आर्बिट्रेशन। अगर आप इसमें कॉर्पोरेट लॉ में जाएंगे तो कॉर्पोरेट लॉ फर्म का एम होता है हम अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाएं जल्दी। दे विल लाइक टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, दे वुड लाइक टू गो फॉर मीडिएशन। आर्बिट्रेशन मीडिएशन में क्या होता है? फटाफट नतीजा। और लिटिगेशन में सालों साल सालों साल सालों साल। हमारे लिए एज एडवोकेट तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बिजी रहते हैं, मगर फॉर पार्टीज इट इज नॉट गुड, इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। सो एडीआर भी आजकल बहुत काम कर रहा है, एडीआर की तरफ भी कॉर्पोरेट फर्म्स बहुत ज्यादा उनका झुकाव है। सो सिने क्वा नॉन इज, he said very important, उससे उनकी बात से हम चैट जीपीटी पे आ गए थे। तो sine qua non is very important essential condition, it's a Latin phrase, Latin phrase है, इसलिए आपको नहीं पता था वो, इसका मीनिंग indispensable, indispensable है, important है, essential condition है, for essential condition for growth in law. You will grow only if your drafting is good. So legal drafting is what we are reading, sine qua non, important condition for career advancement. Right? For career advancement. Law operates through text. Law में हम क्या काम करते हैं? Text होता है ना law में, लिखना तो है ही, बुक्स भी पढ़ते हैं, जजमेंट्स भी होती हैं, ड्राफ्टिंग भी करनी है, तो लॉ ऑपरेट्स थ्रू टेक्स्ट। हम लोग कोर्ट्स भी, क्लाइंट्स भी, एडवोकेट्स भी, वी ऑल रिलाई ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स। ओरली कुछ नहीं होता, वी ऑल रिलाई ऑन डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स। पुअर ड्राफ्टिंग, अगर हमारी ड्राफ्टिंग पुअर है तो दैट लीड्स टू एम्बिग्विटी, उसमें लिटिगेशन रिस्क आ जाएगा। अगर हमारी पुअर ड्राफ्टिंग है तो लोग क्या करेंगे? कोर्ट्स की तरफ जल्दी जल्दी भागेंगे, क्योंकि द ड्राफ्टिंग वाज पुअर। झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या होगा? वी विल गो टू कोर्ट्स, whereas a well drafted document can prevent disputes altogether. इसलिए ड्राफ्टिंग की तरफ बहुत ध्यान देना है। ड्राफ्टिंग इज एक्चुअली, क्या होता है ड्राफ्टिंग में? इट इज थ्योरेटिकल नॉलेज विच इज टेस्टेड। जब हम ड्राफ्टिंग करें तो हमारी नॉलेज जो भी है लॉ की, दैट इज टेस्टेड। दैट इज व्हाट आई सेड, इफ यू गो टू कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, दे टेस्ट यू बाय योर राइटिंग्स ओनली। एंड टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट, आपको क्या करना है? यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, ऑब्लिगेशंस उनकी, राइट्स उनकी, किसकी क्या ड्यूटी है, you have to understand, then only you can draft a good document. So drafting is as a sine qua non is very important for career advancement. Junior lawyers को हमेशा drafting देखकर ही उनको Thank you so much, ma'am, for your insightful and enlightening address. As a token of gratitude and respect, I now request Sonia ma'am, Raghav sir, Prachi ma'am, to please present the memento to our esteemed guest, Dr. Renu Aggarwal ma'am.